हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनरिसा यूट्यूब चैनल। आनिनी टाउन को अलविदा कहने का समय आ गया है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि फ्रेंड्स के साथ जाके थोड़ी नदी के किनारे घूम आऊँ। तो इसलिए हम लोगों ने मिट्टी, मनिया, दिव्या, डॉक्टर हैंडिक और विश्वजीत हम लोग जाके थोड़ी सी नदी के किनारे पार्टी करने के लिए चला गया। और उस दिन मौसम भी अच्छा था, तो इसलिए हम लोग गए और नदी में क्या क्या किए देखते रहिए आगे वीडियो में। যেহেতু আনিনীৰ পৰা যাবলৈ আৰু বেছি দিন নাই, গতিকে আমি ভাবিলোঁ সকলোৱে গৈ অকণমান প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত নদীৰ পাৰত গৈ অকণমান সৰু এটা পাৰ্টি কৰোঁ বুলি। আৰু আমি গ'লোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। পাহাৰীয়া নদী যিহেতু, আমাৰ ভৈয়ামৰ নদীবোৰৰ দৰে ওখ পাৰ নাই, ইমান ধুনীয়া সাগৰৰ নিচিনা মইতো দেখি থাকিবই পৰা নাছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনালোঁ, ফটো মাৰিলোঁ, সকলোৱে মাৰিলে, বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। और खाना के साथ खाने के लिए हम लोगों ने चिकन को भी रोस्ट किया। और नदी के किनारे में ही था एक नेचुरल स्विमिंग पूल, जो वहाँ के लोकल लोगों ने बना के रखा था और इतना साफ़ और गहरा था। और मेरे दोस्त दोनों को लालच आके दोनों गए तैरने के लिए। और पानी इतना ठंडा था कि इन दोनों को जाके आग के पास खड़ा होना पड़ा। नदी की कल कल करती धारा के माध्यम से जीवन की गतिशीलता और सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। এনে লাগিছে যেন এই পানীবোৰে জীৱনৰ গতিশীলতা আৰু সৌন্দৰ্যৰ কথাই কৈ গৈছে। शाम का समय था और हम लोग आनिनी हाट रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए चले गए थे। और यहाँ से भी आप लोग आनिनी का पूरा व्यू देख सकते हैं। और এতিয়া আমি আনিনী হাট ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহি আছোঁ ইভিনিং কফি খাম বুলি। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ সজাই ৰাখিছে। আৰু সেয়া যে দেখিছে এই লাইটবোৰ, সেয়া হৈছে আনিনী চহৰখন। মানে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আনিনীৰ মানে অকণ ওপৰত আছে। তো বলকচোন চাওঁ। इस रेस्टोरेंट में छोटा छोटा हाट भी बना के रखा है, जहाँ एक या दो आदमी आराम से रह सकते हैं। और फैमिली के लिए भी यहाँ अच्छे से इंतज़ाम करके रखा है। और इनका जो मेन जो स्पेशल बात है कि यहाँ आप अगर 10 से भी ऊपर लोग अगर आके यहाँ रुकना चाहते हैं तो भी ऊपर एक्स्ट्रा रूम प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। ওপৰত যিটো ৰুম আছে মানে আনিনী হাটৰ, কাৰণ এইটো পাহাৰৰ ওপৰত আছে যিহেতু, এই ৰুমটো অলপমান বেছি ওপৰত আছে। তো এই ৰুমটো চাওঁচোন বলক, ইয়াত আহিলে আপোনালোকে কি কি সুবিধা পাব আমাক তাৰ কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে কৈছিলে, তো মই আপোনালোকক জনাম। और ये है हम लोग ऊपर पहुंच गए अभी। और ये रूम इतना सुंदर है, पूरा बैम्बो एंड वुड से बनाया हुआ है, मतलब पूरा नेचुरल है। इसमें आप देख सकते हैं आप लोग যে আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে বাঁহ বেতেৰে নিৰ্মিত প্ৰতিটো সামগ্ৰী। আৰু ইয়াত মানে কিছুমান বেলেগ বস্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ, আৰু সেয়াই আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত। মানে মহৰ শিং আৰু মিথুনৰ শিং আৰু অন্য জীৱ জন্তুৰ মানে যিবোৰ শিং বা তেওঁলোকৰ দাঁত, এইবোৰ দেখা পালোঁ। और नेक्स्ट डे हम लोग गए इडुमिसिमी ट्राइब का फेस्टिवल केमेहा को देखने के लिए। और वहाँ आए थे इंटरनेशनल मॉडल मिलिंद सुमन, और वो उनका जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए लोगों को सेल्फी दे रहा था। जैसे ये देखिए, पहले पुशअप उसके बाद सेल्फी। অসমীয়া জিজু তেওঁ মানে আহি আৰু যিখিনি কৰিলে আমি দেখিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি কেমেহাত যিবোৰ ইডুমিচিমি ট্ৰাইবৰ লোকেল তেওঁলোকৰ ফুড এণ্ড তেওঁলোকৰ যিবোৰ ব্যঞ্জন, তাক আমি
টেষ্ট কৰিলোঁ। সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আছিল তেওঁলোকৰ খানা আৰু সকলোৱে একেলগে আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এই ৰাতিৰ দৃশ্য, ৰাতি তেওঁলোকে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰে এনেকৈয়ে। এটা কমিউনিটি হল আছে, সেই হলটোতে সকলোৱে গৈ এনেধৰণে ডান্স কৰে সকলোৱে মিলি পেলাই। ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। আনিনীৰ যিকেইটা দিন আমি আনিনীত কটালোঁ সঁচাকৈ মানে ক'বলগীয়া, মানে মনত থাকি যাব এই চিৰদিন। সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো অকণমান দেখুৱালোঁ কিছুমান মুহূৰ্ত। সকলোবোৰতো ইয়াত দীঘলীয়াকৈ দেখুৱাব নোৱাৰি। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ